कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा कास्ट सिस्टम एंड रिफॉर्मर्स। लर्निंग व्हाट इविल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम, impacts of the reform movements, argument for reforms in the caste system, ideas and efforts of reforms. Some of the social reformers we have already discussed also criticized caste inequalities. Ram Mohan Roy translated an old Buddhist text that was critical of caste. The Prarthana Samaj adhered to the tradition of bhakti that believed in spiritual equality of all caste. In Bombay, the Paramahansa Mandali was founded in 1840 to work for the abolition of caste. बच्चों, कुछ सोशल रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस किया था और क्रिटिसाइज किया था जो कास्ट इनक्वालिटीज़ थी। राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने ट्रांसलेट किया था ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट को जो कि क्रिटिकल कास्ट पर डिपेंड था। In Bombay, the Paramahansa Mandali was founded in 1840 to work for the abolition of caste. Many of these reformers and members of reform associations were people of upper caste. Often, in secret meetings, these reformers would violate caste taboos on food and touch in an effort to get rid of the hold of caste prejudice in their lives. There were also others who questioned the injustices of caste social order. कुछ और लोग थे जो कास्ट और सोशल ऑर्डर पर आवाज उठाते थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था इस चीज को। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th century, Christian missionaries began setting up schools for tribal groups and lower caste children. These children were thus equipped with some resources to make their way into a changing world. The word caste expresses a hierarchical relationship. According to French scholar Louis Dumont, the caste system is based on the notion of purity and pollution. Those who are at the top of pollution purity hierarchy ladder are given the highest place, while those at the bottom are accorded the lowest status. Did you know? क्या आप जानते हैं in ऋग्वेद period people had the freedom to change their profession. ऋग्वेद के टाइम पर जो लोग थे उनके पास में ये राइट था कि वो अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड द कास्ट सिस्टम बिकेम मोर रिजिड, लेकिन पोस्ट वैदिक सिस्टम के बाद में कास्ट सिस्टम ज़्यादा रिजिड हो गया। The caste system began to associate it with birth and became hereditary. The caste system became complex as several subcastes came into existence. कास्ट सिस्टम जो है वो इतना रिजिड हो चुका था कि वो बर्थ और हेरिडिटी पर डिपेंड होकर रह गया था। Evils of the caste system. As the caste system grew rigid, several evils crept into the society. A person born into particular caste was forced to adapt his family profession. The strict caste rules did not permit any change of profession. People could not develop skills other than their own. It hindered the free development of society, which as a result became stagnant. बच्चों, जो पर्सन थे जिस फैमिली में वो जन्म लेते थे, जिस कास्ट में जन्म लेते थे, उनसे उन पर ये दबाव डाला जाता था कि वो अपनी फैमिली के प्रोफेशन को ही वो आगे बढ़ाएं। इसमें क्या होता था कि उनके अंदर जो स्किल्स होते थे उनको वो डेवलप ही नहीं कर पाते थे, वो पहचान ही नहीं पाते थे। The division of society into various castes gave rise to social inequalities. The lower castes were treated as inferior. They were derived of the privileges enjoyed by the higher castes. The rigid caste rules and regulations did not permit inter-caste marriage or inter-dining. The rigid caste regulations narrowed the outlook of people and checked the growth of society. Arguments for reforms in the caste system. The 19th century saw changes in caste-ridden society. Caste reforms were initiated by some enlightened and educated Indians in the 19th century. The reformers were motivated by a spirit of inquiry to replace blind faith in current traditions, beliefs, systems and customs of the society. They were also aware of the fact that the cause of our subjugation was the internal weaknesses of our social structure. Educated Indians were greatly influenced by the Western ideas of humanism and rationalism, and as such, they began to look at the strengths and shortcomings of society in order to remove the weaknesses. The following factors were responsible for initiating of reformers in the caste system. The rigid caste system had divided the Hindu society. The social disunity was distressed
for Hindu society. The educated reformers believed that the hereditary caste system was a great hindrance in the development of one's talents and personal advancement. The rigid caste rules made the Hindu religion unpopular. The lower castes resorted to conversion, mainly to Christianity. Thus, caste system was largely responsible for the development of a narrow outlook among the Indians. It did not allow the Indians to mix freely with the foreigners and adopt radical views. The Shudras were considered untouchable. जो शुद्रास होते थे उन्हें अनटचेबल कहा जाता था, उन्हें ट्रीट किया जाता था, उन्हें छुआछूत कहा जाता था. They lived in seclusion and led a miserable life. They were exploited by the upper castes. अपर कास्ट से इन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था, इन्हें दबाव में रखा जाता था, इनके ऊपर अत्याचार किया जाता था. द कास्ट सिस्टम वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लो फिजिकल डेवलपमेंट, नेशनल पॉवर्टी, हाइंड्रेंस इन इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस, अवर्सन फॉर सोशल रिफॉर्मर्स, लिमिट्स ऑन इंडिविजुअलिटी, individual liberty, hindrance in the development of nationalism, class conflicts, moral degradation and a false sense of a pride in belonging to the upper caste. This create inequalities and disunity in society. इन सभी चीज़ों ने मिलकर सोसाइटी में डिसइक्वालिटी, इनइक्वालिटी और डिसयूनिटी लोगों में फैला दी थी. थिंकिंग शॉर्ट, इफ यू वर अ 19th century social reformer, what would you have done to remove social inequalities that exist at that time? बच्चों सोचिए कि अगर आप 19th century में एक सोशल रिफॉर्मर होते तो आप ऐसी क्या क्या चीज़ें करते सोसाइटी से रिमूव करने में इन इक्वालिटीज़ को हटाने के लिए उस टाइम पर. जरा सोचिए इसके बारे में. आइडियाज एंड एफर्ट्स ऑफ रिफॉर्मर्स. श्री नारायण गुरु 1854 to 1939. Sri Narayana Guru was born into a Izhavas family of Travancore, Kerala in 1854. The Izhavas were considered untouchable. He acquired Sanskrit education, so far considered a prerogative of the upper caste. Only he devoted himself to the cause of the uplift of the Izhavas and other oppressed people. In 1903, he established the Sri Narayana Dharma Pripalan Yoga. This organization carried on a crusade to allow untouchables to worship in Hindu temples. He established several temples without the images of the deities. His organization became a powerful political force of South India in the early 20th century. Did you know Sri Narayana Guru was a rare combination of a saint and social reformer? He said people must achieve threefold cleanliness of thought, word and need. E.V. Ramaswamy Naicker, 1879 to 1973. E.V. Ramaswamy Naicker, popularly known as Period, was born in Madras, Chennai. He was pained to see the sad plight of the Dalits who had suffered seclusion, oppression and exploitation for many centuries. He set up an organization named as Dravid Kazhagam, which worked for the reservation of the low caste people in government jobs. Mahatma Gandhi 1869 to 1948. Mahatma Gandhi rendered useful contribution for reforming the caste system and uplift of the depressed classes. महात्मा गांधी ने भी बहुत एक यूजफुल कंट्रीब्यूशन दिया था रिफॉर्म करने के लिए कास्ट सिस्टम को और उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए उन्हें जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनको. He condemned untouchability. He believed in the doctrine of equality as embodied in the Gita. Mahatma Gandhi undertook fast into death when the British government, through the Communal Award of 1932, tried to separate the Harijans from the other Hindus. He founded the Harijan Sevak Samaj in 1932 for the uplift of Harijans. He began the publication of a weekly paper, Harijan, in 1933 and thought that he took up the cause of Harijan. Harijan meant the children of God. He himself began to live with the Harijans in their colony. He attached great importance to eradicate the evil practice of untouchability. महात्मा गांधी ने कड़ी मेहनत की थी ताकि वो अपने समाज से, अपने सोसाइटी से अनटचेबिलिटी को दूर कर सके. कास्ट स्टडी रिफॉर्म मूवमेंट इन महाराष्ट्र. Jyotiba Phule 1827 to 1890. Jyotiba Phule was born in a low caste family, caste Mali family. He had personally experienced the humiliation and disgrace that lower castes had to face in Hindu society. बच्चों ज्योतिबाई फूले जो थे वो एक लो कास्ट माली फैमिली में जन्मे थे. उन्होंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया था कि कैसे हिंदू सोसाइटी में लोअर कास्ट को अपर कास्ट के द्वारा दबाया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनके साथ इनइक्वालिटी किया जाता है. He founded the Satya Shodhak Samaj in 1873, which crusade against the domination of the high caste. Its aim was to work
for equal rights for the people of the oppressed classes. He condemned the caste system and opened the gates of his Satya Shodhak Samaj for everyone without any restriction of caste and religion. After receiving patronage from the ruler of Kolhapur, they preferred to remain loyal to the British. He wrote in Marathi rather than English and spoke in favor of Bahujan Samaj Majority Association. The second trend attacked the caste system. It became widely popular, particularly in the village. Din Mitra, a newspaper published by Mukund Rao Patil, an exhibition of tamashas, dramas among villagers, helped the Samaj in gaining wide popularity. From mid-1920s, Keshwa Rao Jedhe and Dinkar Rao Javalkar began providing leadership to the Samaj from Pune, which proved to be an anti-British move. Dr. B.R. Ambedkar, that is 1891 से 1956 तक, another caste movement was led by Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar, the framer of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित्स। बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो फ्रेमर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और एक बेस्ट लीडर माने गए थे दलित्स के लिए। फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी, इन्होंने दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी। ही वॉज बॉर्न इन टू द महार कास्ट विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल। ये एक ऐसे कास्ट में जन्मे थे, महार कास्ट में जन्मे थे, जो अनटचेबल था, जिन्हें अछूत माना जाता था, जिन्हें लोअर क्लास माना जाता था। महात्मा गांधी हैज यूज्ड द टर्म हरिजन फॉर द अनटचेबल विच वॉज रिजेक्टेड बाय डॉक्टर अंबेडकर। महात्मा गांधी ने जो अनटचेबल लोग थे उनके लिए एक नाम रखा था हरिजन, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिजेक्ट कर दिया था इस नाम को। महात्मा गांधी बिलीव दैट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वाज अ ग्रेट ऑब्स्टिकल इन ब्रिंगिंग द अनटचेबल्स इनटू अ मेन स्ट्रीम ऑफ Hinduism. But for Ambedkar, the low status of untouchables could not be understood exclusively in terms of the practice of untouchability. Their economic and political subservience were equally important factors. He argued for the recognition of these people as untouchables and as a social minority, as they were subjected to cumulative domination. Did you know? The term Harijan was initially coined by Narsi Mehta, that is 1414 to 81, a bhakti poet to refer to the children of Devadasis, female temple dancers. Dr. Bhimrao Ambedkar was awarded the Bharat Ratna Award posthumously in 1990. Dr. Ambedkar was the first person from his caste who went to England to become a lawyer. बच्चों, क्या आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो पहले इंसान थे अपने कास्ट से जो कि पहली बार इंग्लैंड गए और वहां पर जाकर उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी। He led many efforts to gain entry of untouchables into temples. Later in life, he converted to Buddhism along with his 2 lakh followers in his search for a religion that treated all the members of the society equally. In 1924, Dr. Ambedkar led the foundation of the Akhil Bharatiya Bal Shakti Hitkarni Sabha to improve the lot of depressed classes and to promote education among them. He rendered free legal service to the depressed classes to fight against any injustice. He laid great emphasis on education for the depressed classes. For this purpose, he established the Depressed Classes Education Society and opened many schools and colleges to promote education among the downtrodden. Dr. Ambedkar struggled for the social and political rights of the depressed classes. He forced the British government to remove all the restrictions on the entry of the depressed classes to different government and semi-government jobs. इन्होंने ब्रिटिश के ऊपर ऐसा दबाव बना दिया था जिससे कोई भी लोअर क्लासेस को कहीं भी जाने में मनाही ना हो, फिर चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स हो या सेमी गवर्नमेंट जॉब्स हो. It was due to his efforts that the depressed classes get reservation in the legislative assemblies and legislative councils. ये उन्हीं की मेहनत थी कि जो लोअर क्लासेस हैं उन्हें रिजर्वेशन मिलता है लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में. बच्चों, अब आ जाते हैं केस स्टडी पर. केस स्टडी रिफॉर्म मूवमेंट इन आंध्रा. कांडुकुरी वीरा सांगलिंगम 1848 to 1919. Kandukuri Vilasangam was born into an Orthodox Brahmin family of Andhra Pradesh. He founded the Rajamundri Association in 1878. He worked as a school teacher in his later life and waged a long battle for the rights of women. Campaigned against the caste system and encouraged intercaste marriages. He campaigned against untouchability. He was a great supporter of the oppressed and the downtrodden. He started a social organization called Hitkarini. Impacts of the reform movements. Social reformers contributed a lot in curing the religion and society and raising nationalism on strong footing. The reform
Movements made significant advances in improving the condition and position of women, especially of depressed classes. Many laws were passed. Many reformers set up schools for girls. It served the cause of their education. Almost all the reformers attacked the caste system and the inhuman practice of untouchability. Intercaste and inter-community marriages brought people together. Most of the reformer movements gave rise to feeling of nationalism as they united people by breaking down social barriers. Unfortunately, most of the reformers worked within the framework of the community and as such influenced only a small percentage of the population. Thinking short, the manhole cleans often face humiliation and social discrimination in our society. What will you do ensure the protection of their dignity and respect for their profession? बच्चों, manhole cleaners जो होते हैं उन्हें फेस करना पड़ता है ह्यूमिलिएशन और डिस्क्रिमिनेशन हमारे सोशल और सोसाइटी में। आपको क्या लगता है कि आप कौन से ऐसे राइट्स या कौन से ऐसी प्रोटेक्शन इंश्योर कर सकते हैं उनके लिए जो उनके डिग्निटी और रिस्पेक्ट दे सके उनके प्रोफेशन को? बच्चे इसके बारे में खुद सोचिएगा। लेट्स डू इट। क्रिएट अ पोस्टर एज अ मेंबर ऑफ द सत्य शोधक समाज प्रमोटिंग कास्ट इक्वालिटी। यू यूज powerful phrases, slogans and message if possible. Show your poster in class. बच्चों, आपको एक पोस्टर क्रिएट करना है, एक मेंबर होने के नाते सत्य शोधक समाज को प्रमोट करना है, कास्ट इक्वालिटी को प्रमोट करते हुए आप इसमें फ्रेसेस, स्लोगन्स और मैसेज भी डाल सकते हैं अपने पोस्टर में और इसे अपनी क्लास में दिखाइए। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। वर्ड ब्रेन, prerogative, a special right that somebody has, crusade, a fight for something that you believe to be good. बच्चों, अब आते हैं इसके एक्सरसाइजेस पर। टिक द करेक्ट आंसर। सत्य शोधक समाज वॉज स्टैब्लिश्ड बाय ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। फिल द गैप्स। बच्चों, यहाँ पर कुछ गैप्स दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। पेरियर रामास्वामी वॉज बॉर्न इन मद्रास, नाउ चेन्नई। ट्रू, फॉल्स। आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। बच्चों, चैप्टर की मदद से इन क्वेश्चंस के आंसर की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। बच्चों, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। स्किल्स एनरिचमेंट जोन। Fun activity, perform a play in class on Veer Salingam, express how he worked for the scheduled caste people. One student can play Veera Salingam and other students can play as his supporters or opponents. बच्चों, आपको एक प्ले अपनी क्लास में परफॉर्म करना है वीरा सांगलिंगम के ऊपर और दिखाना है कि कैसे वो शेड्यूल कास्ट पीपल के लिए उन्होंने काम किया। एक इंसान, एक स्टूडेंट वीरा सांगलिंगम को परफॉर्म कर सकता है और कुछ स्टूडेंट्स उसके ओपोनेंट्स और सपोर्टर्स हो सकते हैं। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। एक्टिविटी, कलेक्ट फोटोग्राफ्स ऑफ सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आउट ऑफ द बॉक्स, डू यू थिंक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हैज कम टू एन एंड इन द प्रेजेंट डे इंडिया? बच्चों, क्या आपको लगता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज के प्रेजेंट डे में इंडिया में खत्म हो चुका है? What do you think the reformers started association to work against the repressive caste system? बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। आई होप क्लास में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।